Hello and welcome to this new tutorial. In this tutorial we shall talk about hindrance to good citizenship. आप सबका स्वागत है इस नए ट्यूटोरियल में और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे hindrance to good citizenship and these are the 7 most important hindrance to good citizenship and these are as follows. First, indolence or lack of consciousness. Second, men are usually guided by self-interest. Third, party spirit. Fourth, poverty. Fifth, ignorance and illiteracy. Sixth, defect of the electoral system. And last, vast size of the modern state. So these are the 7 most important hindrances to good citizenship, and now we shall talk about these 7 points more in detail. So let me take first hindrance to a good citizenship, and that is indolence or lack of consciousness. If citizens are indifferent to their rights and duties, and if citizens are too much preoccupied with their private safety and security, then that would result in the long run in the downfall of democracy. Well, according to Professor Lasky, he says that the state is built so certainly upon the character of a man that they can only mold it to their desire by consistent devotion to their activities. Well, this point basically talks about indolence or a lack of consciousness among the people, among the citizens of the society or a state. And it says that if citizens have differences in opinion when it comes to their rights and when it comes to their duties, and if citizens are preoccupied with their own private affairs, private safety and security, then this would result in the long run the downfall of democracy. What does it mean? It means that if people are preoccupied with their own self-interest things, if people are preoccupied with their own self, and if they don't have time to think about their state, if they don't have a time to keep a watch on what is happening in their country, if they ignore things which are happening around them, then obviously their ignorance will cost them a lot, will cost them a big time, and this would bring down the democracy. And therefore Professor Lasky have rightly said that the state is built around certain characters of men, and these men can mold the desire of the state depends on their devotion of their own activities. What does it mean is that the state is built by this man, by the character of this society, and therefore society have to keep a watch on the development, on the issues which are happening in the society, because these issues will have its impact on the society. And if every time citizens ignores the thing which are happening around them, then eventually it will take entire society altogether. It will lead to a downfall of that society, and therefore it will lead to the downfall of democracy. And therefore the first very important hindrance which becomes obstacle to a good citizenship is a lack of consciousness among the people. Therefore people have to be very cautious about things which are happening around them. They must keep their eyes open, they must keep their ears open, they must observe and must raise their opinion to the things which are happening around themselves. And if they don't do so, then this is how it will lead to a downfall of democracy or a society. And therefore the only hindrance to a good citizenship or a good citizen is lack of consciousness. जब हम hindrance to good citizenship की बात करते हैं तब हमें ये समझना चाहिए कि indolence और lack of conscious मतलब आलसी सिटीज़न बहुत ख़तरनाक चीज़ है. हर एक सिटीज़न अगर वो प्री ऑक्यूपाइड हो गया अपने खुद के लाइफ में,
उसको किसी की पड़ी नहीं है, उसको सोसाइटी की कुछ परवाह नहीं है, उसके आसपास उसके अगल बगल में जो चीज़ें हो रही है उसके ऊपर उसका कोई विचार नहीं है, उसका कोई ओपिनियन नहीं है, और उसको वो इग्नोर करता हुआ जा रहा है, तो एक दिन ऐसा आएगा इन लॉन्ग रन दैट द एंटायर डेमोक्रेसी will collapse. When we talk about democracy and when we talk about citizenship, जब हम डेमोक्रेसी और सिटीजनशिप की बात करते हैं तब डेमोक्रेसी को अगर सरवाइव करना है तो सिटीजन्स को बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना होता है। उसका कर्तव्य कोई सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे अपना मतदान देना और ख़त्म हो गया उसका रोल, ऐसा नहीं है। 365 days citizens must keep an eye on the things which are happening around him. वो रिलैक्स नहीं बैठ सकता और उसको कभी रिलैक्स बैठना ही नहीं चाहिए। एक बार रिलैक्स बैठ गया तो उसको आलस आ जाती है, एंड उस आलस के कारण दैट सिटीजन टेंड टू फॉरगेट एंड टेंड टू इग्नोर थिंग्स हैपनिंग अराउंड हिम। वो अपने खुद के लाइफ में इतना बिजी हो जाता है कि उसको आसपास की कुछ पड़ी नहीं है, उसके अगल बगल में जो कुछ हो रहा है उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं देता है, और इसी की वजह से स्लोली और स्टेडली इन अ लॉन्ग रन ये पूरा उसका जो कैरेक्टर है इंडिविजुअल का दैट विल लेट डाउन, दैट विल टेक डाउन इन फैक्ट द डेमोक्रेसी और सोसाइटी। और इसीलिए प्रोफेसर लास्की ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो स्टेट बनी है वो स्टेट बनी है उस इंसान के कारण, उस इंसान का जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर से एक स्टेट बनती है, एंड देयरफॉर उस इंसान में इतना पावर है कि वो पूरी कायनात बदल सकता है, वो पूरी स्टेट का फेस बदल सकता है ओनली थ्रू दैट एक्टिविटीज़। और इसीलिए अगर जिस दिन इंसान चुप बैठ गया तो दूसरी जो फोर्सेस होती है वो उसके माइंड और सोचने का जो तरीका है उसके ऊपर प्रेशर डालती है, और उस प्रेशर के कारण ग्रेजुअली स्टेट कोलैप्स हो जाती है। और इसीलिए अगर स्टेट को बचाना है, अगर सोसाइटी को बचाना है, तो हमें बहुत होशियार रहना चाहिए। वी हैव टू बी अलर्ट एंड वी कैनॉट बी indolence, we cannot be, and therefore we cannot be ignorance to the role as a good citizens. So this is the first point. What stops, what lacks a good citizenship is indolence or lack of consciousness. Second very important point of hindrance to good citizens is men are usually guided by self-interest. Well, if man or an individual ignore his or her public responsibility and only concentrate on self-interest, then this would be hindrance to a good citizen. No democracy can survive for long if the industrialists are motivated by private alone. In short, no democracy can survive if people become self-interested in him or himself or herself without giving back to society. Very true. When we talk about second very important point of hindrance to a good citizenship or obstacle to that good citizenship, or what stops you becoming a good citizen, is that when men usually become self-interest. And people who become self-interest, individual who become self-interest, they tend to ignore the public responsibility. And this is very important point to understand, that citizens should not ignore their public responsibility. Yes, at one point they are individual, but beside being an individual, they are very important part of a society, and therefore they have certain responsibility towards society. But in reality, what happens here is that when man become self-concentrated, or when he becomes self-interested person, or when he becomes selfish person, he stops his contribution to the citizenship, or he stops his contribution to society. And therefore, at end of the day, if individual does not contribute back to society, then the society will crumble, society will collapse. And therefore, the second very important point of hindrance to a good citizen is that men are usually guided by self-interest,
and this is what stops them to contribute back to a society. And if a citizens wants to be a good citizens, then always they have to remember that they must contribute something back to their society, because it is a society which has contributed in the development of the individual as well as society. जब हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं हिंड्रेंस टू अ गुड सिटीजनशिप, जो चीज़ एक सिटीज़न को स्टॉप करती है ऑफ बिकमिंग अ गुड सिटीज़न इज़ सेल्फिश इंटरेस्ट. जब कोई इंसान सिर्फ खुद के बारे में ही सोचता है, सिर्फ खुद का सेल्फिश इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, तो वो कभी भी सोसाइटी के बारे में अच्छी चीज़ें नहीं सोचेगा. और इसीलिए जब वो सेल्फ इंटरेस्टेड बनता है तब वो सोसाइटी की तरफ देखता नहीं है, तब वो सोसाइटी को कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है. और इसी की वजह से वो इंसान अंत में गुड सिटीज़न नहीं बन सकता. और इसीलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल को ही मस्ट कंट्रीब्यूट समथिंग बैक टू इस सोसाइटी, क्योंकि आज अगर वो इस मुकाम पर है वो सिर्फ उस सोसाइटी के कारण वहाँ पे पहुँचा है, क्योंकि हमारे सक्सेस में हमारे सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है. और इसलिए वो हमारा कर्तव्य है कि हम कुछ ना कुछ इन सम वे अपने सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करें, ताकि सोसाइटी को भी थोड़ा बेनिफिट मिले. और इसीलिए जब कोई भी इंसान सेल्फ इंटरेस्ट हो जाता है, कोई भी इंसान सेल्फिश बनता है, तो वो दूसरा कारण है कि वो कभी भी अच्छा सिटीज़न नहीं बन सकता. सो इसीलिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि वी हैव टू कीप आवर ओन इंटरेस्ट असाइड and we must work towards society and become a good citizens. Now let's discuss about the third very important hindrance to good citizens, and that is party spirit. Well, it is true that party system is necessary for the working of democracy. But if a citizens of a democracy do not think above the party line, then democracy will not survive. And therefore, citizens of a democracy must keep before themselves the national interest. However, in actual practice, the political party deviate from the national interest. In fact, political parties do not hesitate to adopt fair or a foul means to win elections. In short, everything is subordinated to the interest of the party. Thus, the situation that encourage insincerity, falsehood, and selfishness are the obstacles or hindrance to a good citizenship. Well, when we talk about party spirit, it is true that party system is necessary for the working of democracy, because without political parties, we cannot have a democracy. That's very simple. And therefore, we need to understand that sometime in politics, citizens who do not think above party line, then democracy will not survive. What does it mean here is very simple, that many a time a situation may come, many a time a situation may arise wherein certain political leaders or certain political individual may have to take certain decision which benefits the national interest. And many a time it is above the party line, which is above the party. Remember one thing, when you compare a political party and a nation, then it is always your nation comes first. Because many political parties will form, many political parties will vanish, new political parties will form, new ideologies will emerge. But in that bargain, nation should not suffer, a country should not collapse. और इसीलिए हमें समझना चाहेंगे, पार्टियां बनेगी, पार्टियां बिगड़ेगी, अंत में देश हमेशा रहना चाहिए. And this is what the point we need to understand, that we must sometime think about the party line in order to save our democracy. But many a time we have seen that certain political parties, they deviate from the national interest. They keep their political party's interest more important.
They set their political parties as a priority. The interest of their political party becomes priority, and national interests somewhere get uh, lost out. And therefore, we need to remember that in such situation, we must encourage sincerity. We must get rid of falsehood. We must get rid of selfishness, because uncertainties, falsehood and selfishness are the obstacle to the good citizenship. जब हम पार्टी स्पिरिट की बात करते हैं तब हमें ये समझना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रहेंगी तो डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं करेगी, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. और इसीलिए हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब जब वक्त आएगा और जब जब वो सिचुएशन आएगी तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडरान होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स होते हैं, उन्हें कभी कभी अपने देश के लिए अपने पार्टी को त्यागना बहुत ज़रूरी है. यू नीड टू थिंक अबाउ पार्टी लाइन, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं होता. आज पार्टी रहेगी, कल नहीं रहेगी. आज टूट जाएगी, फिर से कल बन जाएगी. लेकिन देश कभी टूटना नहीं चाहिए. डेमोक्रेसी जो देश में होती है उसको कभी नीचे नहीं उतारना चाहिए. लेकिन कभी कभी हमने ये भी देखा है कि ऐसे भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे देश में आती है, आई है और गई है और आगे भी आते रहेंगे, वेरिन उन्होंने अपने पार्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है. दे गेट डिविएट फ्रॉम द नेशनल इंटरेस्ट. और ये पूरा जो सिचुएशन है वो किस लिए होता है? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर है या पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कार्यकर्ता है या फॉलोअर्स हैं, दे बिकम इनसिंसियर, दे प्रोपोगेट फॉल्सहुड और वो सेल्फिश बनते हैं. और जब वो सेल्फिश बनते हैं, झूठी खबरें स्प्रेड करते हैं और इनसेंसिरिटी दिखाते हैं टुवर्ड्स कॉमन मैन, तभी वो अच्छा सिटीज़न नहीं बन सकते. So if you want to become a good citizen, irrespective of which political party you may belong to or which ideology you may follow, you must remember the national interest. And when we talk about national interest, it is not just a national interest per se, but it should be the interest of the citizens. कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों के विचार क्या है. और जब कोई ये इंसान समझेगा तभी वो गुड सिटीज़न बनेगा. लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कि नेशनल इंटरेस्ट को साइड में रखते हैं और सिर्फ अपनी पार्टी की बात आगे रखते हैं. और इसी के वजह से जब कोई भी इंसान ब्लाइंड हो जाता है, अंधा हो जाता है अपने पार्टी के प्यार में, तब वो कभी भी अच्छा सिटीज़न नहीं बन सकता है. वेल, द नेक्स्ट पॉइंट or the hindrance to the good citizenship is poverty. Well, another obstacle to good citizen is poverty. A poverty-stricken citizen is indifferent towards life and its problems. He is not in a position to take an active part in the management of the affairs of the state. In fact, he is frightened by the nightmare of hunger. Moreover, poverty often drives citizens towards anti-social activities such as theft, cheating, murders, and etc. In fact, it is said that unless every citizen possesses a basic economic minimum, he or she cannot be a good citizen, and therefore, thus, it is state responsibility to provide every citizen a reasonably decent standard of living. Very true. Now the poverty becomes another very important obstacle to a good citizenship, and it is very true, it is very fact that people who are poor, people who are living below the poverty line, or the citizens who are living below the poverty line, they have a different attitude towards their life and a problem. They are not interested in your politics. They are not interested who comes in power or who holds the power, because their main problem is their hunger. The main problem is their own life. Because once person is a poor, once citizen is a hungry, he is not in a position to take active part in the management of the affairs of the state. Very simple. For him, the biggest question, biggest challenge is to gather some food. For him,
his life is more important than what the society is thinking about him or how the state is changing. Because a hungry man, a hungry soldier cannot fight a battle. This is how we look at to our society. Because right now he is frightened and his biggest nightmare is the hunger. And because he is poor and because he is living below the poverty line, he or she would be attracted towards all the antisocial activities. And therefore we have a crime, therefore we have thefts, therefore we have cheating, therefore we have murder increasing day by day in a society where society has been stricken by the poverty. And therefore it is state responsibility to provide the minimum standard of living, a reasonable decent standard of living at least to its citizens, in order to bring them back to the mainstream of the politics. And therefore when state fails to do so, the person who is a poor, a citizen who is a poor, cannot become a good citizen. जब हम हिंड्रेंस टू गुड सिटीजनशिप की बात करते हैं तो पॉवर्टी, गरीबी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा चैलेंज है इनफैक्ट। क्योंकि जब कोई भी स्टेट और सोसाइटी गरीब होती है और सिटीजन्स गरीबी की रेखा के नीचे और दबे हुए होते हैं, तो उनका जो नज़रिया होता है टुवर्ड्स लाइफ एंड द प्रॉब्लम इज़ डिफरेंट। उनको कोई परवाह नहीं है कि कौन रूल कर रहा है, कौन सी पार्टी पावर में आएगी या फलाना फलाना। उनको पड़ी है सिर्फ अपनी, क्योंकि वो लोग गरीब हैं, वो गरीबी में इतने दबे हैं, गरीबी में इतने मरे हैं कि उनको सिर्फ एक ही चीज़ की परवाह है कि हमें खाना कल का मिलेगा कि नहीं। क्योंकि वो जीते सिर्फ जीने के लिए, उनको पड़ी ही नहीं है कि सोसाइटी कहाँ पे जा रही है, वेदर कंट्री इज़ डेवलपिंग और नॉट। बिकॉज उनका जो सिस्टम है, उनका जो सोचने का तरीका है वो आज का है, कल का नहीं। और जब हम गरीबी की रेखा में रहते हैं, जब हमारे लोग बहुत गरीब रहेंगे, तो वो थोड़ी ना उस पोजीशन पे पहुँचेंगे कि स्टेट का अफेयर समझेंगे। जैसे मैंने बोला, दे विल बी नॉट इन अ पोजीशन टू टेक एक्टिव पार्ट, बिकॉज उनका जो सबसे खतरनाक जो सपना होता है या खतरनाक जो चीज़ है वो है हंगर, वो है भूखमरी। जब तक उनके पेट में कुछ दाने नहीं जाएंगे तब तक वो कुछ सोच नहीं पाएंगे। और जैसे एक कहावत है कि भूखे पेट कोई भी जवान युद्ध नहीं लड़ सकता। इफ़ यू नीड पीपल टू थिंक अबाउट अ नेशन, देन यू मस्ट प्रोवाइड देम बेसिक नेसेसिटीज़। और जब ये स्टेट फेल कर जाते हैं, लोगों को वो चीज़ मुहैया करने में स्टेट जब फेल हो जाती है, तब वो लोग क्या करते हैं? वो लोग चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, मर्डर्स विल इंक्रीज, और जो क्राइम रेट है वो बढ़ता रहेगा। और इसीलिए उस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे गरीबों के लिए कुछ करें, उनके लिए सोशल स्कीम्स लाए, उनके लिए डायरेक्ट बेनिफिट कुछ दे दें, तभी आगे चलकर ये लोग अच्छे सिटीजन बन सकते हैं। अगर स्टेट या सोसाइटी उन गरीबों को या उस गरीबी को हटाने में कुछ नहीं करेगी, तो वो सिटीज़न जो गरीब की रेखा के अंदर रहते हैं वो कभी भी अच्छे सिटीज़न नहीं बन पाएंगे। एंड इसीलिए पॉवर्टी इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ एनी सोसाइटी for that matter, and here poverty is the biggest problem to become a good citizens. So next fifth important point of hindrance to a good citizenship is ignorance and illiteracy. So if we expect a citizen to make his full contribution to public good, he should be educated and well informed, because ignorant person cannot make a distinction between right and wrong. In fact, narrow-mindedness based on evil customs and institutions obstruct the right judgment of citizens. So, this makes them unfit to cooperate in the achievement of the goal of a common good of the whole community. And therefore, according to Burke, education is the best defense of citizenship. Very true that
Ignorance and illiteracy are the another very important obstacle to become a good citizens. And why ignorance and illiteracy is biggest problem? Because if we accept citizens to make a contribution, then they should be educated, because educated person would know the distinction between what is right and what is wrong. Ignorant person would never going to understand that what is right for him or what is right for his society or his community, and what is wrong for him as well as to his community. And therefore what we need to understand here is education is the biggest important factor. And therefore when we lack in giving them basic infrastructure of education, what we create is a narrow minded people. We create a narrow minded evil customs. We create a narrow minded institution, and their whole objective is to obstruct the right judgment. So when any state, any society fails to provide education, when any society fails to provide infrastructure, what happens is that we create a people with a narrow minded personalities. And as I said, in societies we have some institutions or some groups whose entire objective is to spread wrong information, is to misguide the young generation, brainwash them, and take away them from the mainstream society. And this leads to the problem of a right judgment, because someone who's not educated, someone who's not know what is right and what is wrong, he will make a bad choice for the society. He will become a problem for a society, and therefore such people will make unfit to cooperation. Such people with a narrow minded, without any education, will never ever going to cooperate with the society or to achieve a common goal. And therefore Burke has rightly said that education is the best defense of a citizenship. Education is the only way through which we can liberate our minds, we can uplift our society, we can uplift our community, and education is the only way through which we can protect ourselves. जब हम हिंड्रेंस टू गुड सिटीजन्स की बात करते हैं तब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, इग्नोरेंस और इल लिटरेसी। शिक्षा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी सिटीज़न शिक्षित नहीं है तो उसको कभी भी पता नहीं चलेगा कि जो एक्शन वो कर रहा है, जो एक्टिविटी वो कर रहा है, उसका उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा, जो चीज़ें उसके अगल बगल में है, जो चीज़ें उसके आसपास में हो रही है वो राइट है या रॉन्ग है, ये उसको कभी भी पता नहीं लगेगी। और हमारे सोसाइटी में ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस है, ऐसे भी ग्रुप्स है, उनके लिए ऐसे लोग जो शिक्षित नहीं हैं, वो लोग उनके लिए एसेट बनते हैं, क्योंकि वो लोग उनके माइंड में बहुत से गलत विचार डालेंगे, उनको इतना कंफ्यूज करेंगे, उनको इतना ब्रेन वॉश करेंगे दैट दे विल एंड ऑफ द डे विल नेवर गोना अंडरस्टैंड व्हाट इज द राइट जजमेंट। और ऐसे लोग बाद में सोसाइटी के लिए एक परेशानी हो जाती है, और इसीलिए ये लोग आगे चलकर कभी भी एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ब्रेन वॉश हो चुका है, उनको कुछ और ही चीज़ें पढ़ाई गई हैं, उनके दिमाग में ऐसे विचार डाले गए हैं जो कि सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं हैं। और इसीलिए इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी बिकम्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर अ गुड सिटीज़न। अगर एक सिटीज़न को अच्छा बनना है तो उसे हमेशा एजुकेशन देना चाहिए, अच्छा एजुकेशन, जिससे उसे पता चले कि क्या सही है और क्या गलत है। और इसीलिए बर्क ने बहुत अच्छी तरह से समझा है कि एजुकेशन ही सबसे अच्छा डिफेंस है किस सिटीज़न के लिए। जब कोई सिटीज़न पढ़ा हुआ होगा वो प्रश्न पूछेगा सिस्टम से, वो जवाब मांगेगा सोसाइटी से,
अपने लीडर्स से जवाब मांगेगा, अपने गवर्नमेंट से जवाब मांगेगा, जब वो उसको कॉन्फिडेंट आ जाएगा क्वेश्चन करने का, तभी सोसाइटी को एक विजन मिलेगा. और इसीलिए ignorance and illiteracy is the biggest problem for a good citizenship. Next very important point or the obstacle to a good citizenship is defect of the electoral system. Well, if a large or small section of the people go unrepresented, then these people cannot take interest in the affairs of the state. In fact, if newspapers or media ignores the defect in the electoral system, then this will destroy the essence of a democracy. And therefore, if intelligent people do not evaluate the loophole in the electoral system, then it would destroy democracy. And therefore, defect in electoral system is another important hindrance or obstacle to a good citizens. Well, when we talk about defect of the electoral system, then we must understand first that no system in the world is a perfect. Every democracy, every democratic state is in itself an experiment which people have done. And over a period of time, we have realized that there is no other better system than a democracy. Again, I am not saying that democracy is the best system of governance, but as of now, we don't have any other system, and therefore we have to accept that democracy is the only system which can solve the problem. And therefore, here the point what we need to understand is that if large or a small people in a society do not get representation, if these people are unrepresented, if these people are not represented in the system, then these people cannot take interest in the affairs of the society or a state. What does it point says that in a big country or in a small country, when we talk about democracy, when we talk about citizenship, we are basically talking about the opinion of the people. And therefore, every time, every state must get an opinion from its own people, whether they are in minority or whether they are in majority. We must represent them in our system. And if we fail to represent those people, then we are slowly and steadily we are ignoring a group of a people. And when we ignore that group of a people, then those people will never going to take interest in the affairs of the state, and therefore we must give them equal representation. And therefore here media and newspapers plays a most important role in highlighting these defects. Newspaper and media therefore cannot ignore this defect. If there is a defect in the system, it is media's responsibility to bring it back into the mainstream. Let there be a discussion, let there be a debate. And if media does not bring this defect into the limelight, then media will destroy the very essence of democracy. Not only media or a newspaper, but also intellectual people also have to evaluate the entire defect in the electoral system. We must bring the ideas onto the table. Intellectual people therefore must debate, and if they also do not evaluate the group of people who have been isolated or the defect in electoral system, then this will be a loophole in the democracy, and this loophole eventually will destroy democracy. And therefore, end of the day, defects in electoral system are the hindrance to a good citizenship. ये जो पॉइंट है डिफेक्ट ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम, बहुत सिंपल पॉइंट है और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है. जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे डेमोक्रेसी में बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर लोग ज़्यादा या कम नंबर्स में रहते हैं. भले वो छोटे नंबर में क्यों ना हो, उनको भी रिप्रेजेंटेशन देना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर किसी कारणवश
हम उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं, देन उन लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी नहीं रहेगा। अगर उन लोगों को कोई भी रिप्रेजेंट करने वाला नहीं रहेगा तो उनकी जो विचार है, उनके जो डिमांड्स है, वो कोई भी स्टेट के सामने नहीं रख पाएगा, और इसकी वजह से वो लोग कभी भी स्टेट के अफेयर में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे। और इसीलिए न्यूज़पेपर एंड मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है डेमोक्रेसी का। इसलिए कहते हैं कि मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। उनका काम यही है कि अगर इलेक्टोरल सिस्टम में कहीं पर भी अगर डिफेक्ट है तो उसको जनता के सामने लाना चाहिए, ताकि इंटेलेक्चुअल पीपल उनके बारे में कुछ पढ़े, उनके बारे में कुछ डिस्कशन करे एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर न्यूज़ मीडिया उनको उजागर नहीं करते हैं और इंटेलेक्चुअल लोग भी उनके बारे में बातचीत नहीं करते, डिबेट नहीं करते, देन ग्रेजुअली we would destroy the essence of democracy. Gradually, this would be the loophole in destroying our democracy. अगर हम उस loophole को, उस डिफेक्ट को अगर हम उजागर नहीं करेंगे तो अंत में हमारी डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। और इसीलिए डिफेक्ट ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम is the biggest hindrance or obstacle to a good citizens. And the last very important point of the hindrance to a good citizenship is the vast size of the modern state. So, when we talk about the vast size of the modern state, it is important to note that the modern citizens find little opportunity to take direct part in the process of the government. In fact, sometimes the problems of modern government are highly technical and complex, and an ordinary citizen finds himself helpless. Moreover, the anarchic conditions of unplanned economy lead to increasing isolation. So, when we talk about the last very important point, the vast size of the modern state, what does it say? It's very simple, that it is important to note that modern citizens finds a little opportunity, little time to play a direct part or to contribute into the process of the government. It's very simple, because in modern time people don't have that understanding of the state. I'm not saying that every citizen in the modern time does not have a time to think about government, but in modern citizens, they prefer to spend their time in some other activities than to think about state, and therefore they play their role only as and when the election is called upon, and therefore they play a little role or little opportunity into a direct part or into a direct process of the government. Now here the problem of the modern government is that because in modern time the modern government are dealing with more technical and more complex problems of the state. An ordinary citizen who does not understand technical part of it, who doesn't understand the complexity of a modern government, will find helpless, and therefore he or she would prefer that it's better to stay away from the complexity of the state and the politics and just play the role as and when the election is called upon. And therefore sometimes the anarchic conditions in the society or in the state or in the country, especially when it comes to economy and especially when it comes to unplanned economy, can lead to the increasing isolation. Very true. If any big nation, a vast nation like even let's say our country, India, if we do not plan our economy systematically without keeping anybody out of the loop, or if we plan our economy just keeping only some people into the story or some people into the picture, then what are we trying to do is we are isolating most of the people. Example, let's say tomorrow we come up with the economic policy, and if that economic policy only benefit 20% of the Indian population, then what are we trying to do here is that 80% of the population will go into isolation, and therefore every policy especially related to economy
has to be planned effectively in order to bring everybody into the main fold of that policy. Any policy decision must benefit a larger section of the society. Every economic policy must be introduced only after taking consensus of the people. Then only we can have the better democracy, or this is how you can be a good citizens. But by and large, sometime in some states, in some society, in some countries, unplanned economic activities are being carried out, and this lead to increasing isolation of the people because the country size is big. So अंत में जब हम हिंड्रेंस ऑफ सिटीजनशिप की बात करते हैं, हिंड्रेंस टू अ गुड सिटीजनशिप की बात करते हैं, तब ये भी पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि साइज ऑफ द कंट्री मैटर्स अ लॉट. अगर बड़ा देश रहेगा तो बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि आज के तारीख में मॉडर्न टाइम में मॉडर्न सिटीजन जो है उसको वो ज़्यादातर टाइम अपने लिए निकालना चाहता है. ही और शी डज नॉट हैव दैट इंक्लिनेशन to take part into the system or to take part in the process of the government. उसकी सोच थोड़ी डिफरेंट है. उसकी सोच है कि जब भी इलेक्शन आएगा, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, अपना वोट डालेंगे और निकलेंगे. उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा. और उसी की वजह से आज का जो मॉडर्न सिटीज़न है, ही और शी इज़ अट्रैक्टेड टू वेरियस अदर थिंग्स. और यही प्रॉब्लम है आज का मॉडर्न स्टेट का और आज का मॉडर्न गवर्नमेंट का, क्योंकि लोगों का सोचने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट है. वो सोचते हैं कि हमें गवर्नमेंट का कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो चीज़ें होती है वो बहुत टेक्निकल होती है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है. और इसीलिए जो ऑर्डिनरी सिटीज़न होता है वो हेल्पलेस फील करता है कि यार मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सरकार क्या कर रही है, कैसे नीतियाँ बनती है, कैसे कानून बनते हैं, कैसे डिसीजन लिए जाते हैं. वो सिर्फ एक मुख्य दर्शक बनकर खड़ा रह जाता है, और उसी की वजह से वो सिटीज़न ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल नहीं प्ले कर पाता. तीसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम कोई अपना इकोनॉमी प्लान करते हैं, कोई भी पॉलिसी हो या कोई भी इनिशिएटिव हो, अगर उस इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में लोगों के अगर विचार नहीं लिए गए और तो वह पॉलिसी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी. और ज़्यादातर जो बड़े देश होते हैं वहाँ पर हर एक इंसान का ओपिनियन लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. एंड मेनी टाइम इन सच सर्कमस्टेंसेस अनप्लान्ड इकोनॉमी को ज़्यादा फोकस मिलता है. और बिकॉज जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं विदाउट टेकिंग पीपल इनटू कंसिडरेशन, तो हम बहुत से लोगों को आइसोलेशन में डालते हैं. और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर होता है उस देश में जहाँ पर देश का जो टेरिटरी है वो बहुत बड़ा है, बिग कंट्रीज़. बिकॉज बिग कंट्रीज़ में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कनेक्टिविटी, लैक ऑफ richness to that point of the world or to that part of the world, we have these problems in a society. और इसीलिए हमें ये समझना चाहिए अंत में कि बड़े स्टेट्स का डिसएडवांटेज यही है कि हर एक सरकार का जो पैसा होता है वो लास्ट आदमी के पास नहीं पहुंचता. And therefore somebody rightly said that if you have a small state, you develop effectively, and if you have a big state, you have big problems. So the last very important part of the hindrance to a good citizenship is that the vast size of the modern state and the problems associated with it. So these are the 7 most important hindrance to a good citizens, and I hope you have understood these points. So see you soon in next tutorial. Till then, take care.